Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman, EBP 2101077, and I am from third year evening section B. I'll be continuing from where my other classmate and group member Usama Javed has left, which is at symptoms of adenocarcinoma. I'm going to start off by reciting two ayah 9 and ayah 10 of Surah Kahf and their translation and tafsir. So let's begin. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Have you, O Prophet, thought that the people of the cave and the black were the only wonders of our sign? Tafsir. Over here, Allah Ta'ala is mentioning that their case was not amazing. Their case over here suggests that the case of the cave, the people of the cave, the people of Kahf, it wasn't amazing compared to our powers and ability for the creation of the heavens and earth, the alteration of night and day, and the subjugation of the sun, moon, and heavenly bodies, and other mighty signs indicate the great power of Allah and show that He is able to do whatever He wills. He is not incapable of doing more amazing things than the story of the people of the cave. Similarly, Ibn Jorij reported Mujahid saying about, do you think that the people of Al-Kahf and Al-Rakim were wonders among our signs? Among our signs are things that are more amazing than this. And the second ayah quotes, is awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Remember when those youths took refuge in the cave and said, Our Lord, grant us mercy from yourself and guide us rightly through our ordeal. Over here, when the young men fled from refuge to Al-Kahf, they said, Our Lord, bestow on us mercy from yourself and facilitate for us a fare in the right way. Here Allah tells us about those young men who fled from their people for the sake of their religion, fearing persecution. So they fled, taking refuge in the cave of a mountain, where they hid from their people. When they entered the cave, they asked Allah to show mercy and kindness towards them. So basically, Allah Ta'ala is mentioning that the people of Kahf, they called upon Allah for His mercy. And these are the 9th and 10th ayah of Surah Kahf, and we're going to move on to a hadith that was provided, and the hadith in Arabic is An Abi Sayyid qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akthiru wa zikrallahi hatta yaqulu majnun. तर्जुमा, हज़रत अबू सैयद खिदर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो इतना और इस तरह करो कि लोग कहें कि ये दीवाना है। तशरी, अहले दुनिया जो ताल्लुक बिल्लाह की दौलत से महरूम हैं, जब किसी ऐसे अल्लाह वाले को देखते हैं जिसको ये दौलत नसीब है और उसकी वजह से वो दुनिया की तरफ से किसी कदर बेफिक्र और अल्लाह की याद और उसकी रज़ा तलबी में मुनहमक है और उसी के नाम की रट लगा रहा है, तो अपने ख्याल के मुताबिक वो उसको दीवाना कहते हैं। हालात का वाक़या ये है कि वो खुद ही दीवाने हैं। And after we've mentioned both the ayahs and the hadith, let's move on to the presentation. We're going to be discussing symptoms of adenocarcinoma. The symptoms of adenocarcinoma can vary depending on the location of the cancer. Here are some common symptoms of adenocarcinoma. So adenocarcinoma में हम लोगों को unexplained weight loss, fatigue and weakness, pain and affected areas, difficulty in swallowing etc. ये सारी हम लोगों को महसूस हो रही होती हैं। अब चार्ट showing it is over here. आप यहाँ पे देख सकते हैं
a cough that persists, worsens or produces blood, wheezing, chest pain, fatigue, shortness of breath, unexplained weight loss, ये सारे एडिनोकार्सिनोमा के सिम्टम्स हैं. ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? Diagnosis. The diagnosis of adenocarcinoma typically involves several steps. First of all, we move on to medical history and physical examination, जिसमें हमारा डॉक्टर हमसे अपने पास्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछता है और मेडिकल हिस्ट्री लेता है हमारी, और फिर फिजिकल एग्जामिनेशंस करता है, चेक करता है कि कैंसर है मे बी या नहीं. बेसिकली ही इज ट्राइंग टू लुक फॉर hard masses on our skin, or something that is protruding outwards, or something that is inside our mouth maybe. वो मतलब physically examine करता है. And then if there is not enough evidence from physical examination, we go for confirmatory tests such as biopsy. A biopsy is a procedure in which a small sample of tissue is taken from the affected area and examined under a microscope for the presence of cancer cells. This is the most definitive way to diagnose adenocarcinoma. Moving on, we have some different visually we are representing different things that we can use to do diagnosis for adenocarcinoma. Colonoscopy basically means we enter through the rectal region using a कैमरा. एक कैमरा लेके हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं थ्रू द एनस, और फिर हम जो है उसके अंदर एग्जामिनेशन करते हैं. आगे जाके हम लोग एग्जामिन करते हैं कि वेदर और नॉट कोई इशू है या नहीं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है? एपिडेमियोलॉजी. विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान सिंस 2023, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC हैज रिपोर्टेड इन पाकिस्तान दैट द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड कैंसर इज 0.18 मिलियन, द नंबर ऑफ कैंसर फेटालिटीज इज 0.11 मिलियन, एंड द नंबर ऑफ प्रेवलेंट केसेस, जो कि 5 साल से ज़्यादा के केसेस होते हैं वो प्रेवलेंट होते हैं, कि मतलब एक ही बीमारी 5 साल तक है, इज 0.32 मिलियन. तो ये जो है कुछ इंटरनेशनल फिगर्स हैं पाकिस्तान के हिसाब से कि ये एपिडेमियोलॉजी मतलब कि ये कितनी ज़्यादा फैलती है पाकिस्तान के अंदर, कितनी ज़्यादा कॉमन है बीमारी. उसके बाद हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ एडिनोकार्सिनोमिक सेल. अगर हम देखें तो हमारे सेल का ल्यूमन और एपिथेलियल दोनों रप्चर होते हैं और बहुत ख़राब हालत हो जाती है सेल की. Treatment. The treatment of adenocarcinoma depends on various factors such as location, stage and extent of cancer, as well as overall health of the patient. Here are some common treatment options for adenocarcinoma. Adenocarcinoma के कुछ common treatment options हमारे पास क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है सर्जरी है. सर्जरी हम लोग एडिनोकार्सिनोमा की तब कर सकते हैं अगर तो वो कार्सिनोमा, अगर तो कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हुआ है. If the cancer is not spread throughout the body and it is only localized to one region, then we can perform a surgery and cut out the abnormal cells. remove कर सकते हैं हम सर्जरी की मदद से. तो ये basically first treatment option होता है for adenocarcinoma, especially if the cancer is localized and has not spread to other parts of the body. The surgery may involve removing the affected tissue, the entire organ or nearby lymph nodes. उसके बाद हमारे पास रेडिएशन थेरेपी होती है. रेडिएशन थेरेपी से हम हाई एनर्जी रेडिएशंस यूज कर सकते हैं. दे किल द कैंसर सेल्स एंड आल्सो अफेक्ट नियर बाय सेल्स, बट दे आर मेनली फोकस्ड ऑन टू द कैंसर सेल्स. इट कैन बी यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सर्जरी और कीमोथेरेपी. रेडिएशन थेरेपी इज ऑफन यूज्ड टू ट्रीट एडिनोकार्सिनोमा दैट हैज स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज और लिम्फ नोड्स. Moving on, we have chemotherapy. Chemotherapy is a treatment which involves using drugs to kill cancer. कोई medical drugs हो गए, कोई chemical compounds हो गए, कोई killing agents हो गए. Usually जो alkylating agents सबसे ज़्यादा use होते हैं. May be used in a specific area or throughout your entire body. Alkylating agents are most commonly used in the as they damage cell DNA to prevent cancer cells from dividing. Nitrosoureas are a particular type of alkylating agents. तो हमारे पास जो है कुछ हमारे पास alkylating agents जो कि हम commonly use करते हुए पाए जाते हैं वो हैं ऑल्ट्रेटामाइन, बेंडामास्टाइन, ब्यूसल्फान, कार्बोप्लेटिन, क्लोराम्ब्यूसिल, सिस्प्लेटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड. ये सारे वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो हम कॉमनली कीमोथेरेपी के लिए यूज कर रहे होते हैं. विद दैट आवर complete presentation of adenocarcinoma has been completed. Thank you so much. Allah Hafiz.